Hello students, welcome back to BA third semester's class. Here I will be beginning with paper 1, that is Philosophical Foundations of Education, शिक्षा के दार्शनिक आधार. We will be starting with the first topic of unit 1, that is philosophy, meaning, concept and scope. दर्शन शास्त्र, अर्थ, परिकल्पना एवं क्षेत्र. Now just have a look on what we will be studying here. Points to be covered here are origin of philosophy, दर्शन का मूल, meaning of philosophy, दर्शन का अर्थ, definition of philosophy, दर्शन की परिभाषाएं, functions of philosophy, दर्शन के कार्य, philosophical methods, दार्शनिक पद्धतियां, scope, branches of philosophy, क्षेत्र और दर्शन की शाखाएं. Let us now have a look on the origin of philosophy. दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? There are different views regarding the origin of philosophy. Some believe it is wonder, while others believe it is doubt, while other thinkers believe that mental unrest of people leads to philosophy. We will be taking one by one each of them. Let's begin with wonder. Ancient Greek thinkers, they believed that philosophy originated with the feeling of wonder. प्लेटो जो एक महान दार्शनिक थे, उनका मानना था कि दर्शन का जन्म आश्चर्य, कौतूहल या जिज्ञासा से हुआ. इसके अलावा कुछ अन्य दार्शनिक मानव मन में व्याप्त संदेह को दर्शन का जनक मानते हैं. उनका मानना था कि मन में जो संदेह उत्पन्न होते हैं, उन संदेहों के निवारण के लिए प्रमाण इकट्ठा किया जाता है और इस प्रकार दर्शन का आरंभ होता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेने डिकार्टेस नेम, who was the father of modern Western philosophy, he believed that doubt leads to philosophy. संदेह भावना ही दर्शन की जननी है. संदेह भावना ही दर्शन की जननी है. To doubt is to think and to think is to exist. इस प्रकार वो मानव की एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं. वो कहते हैं, उनका बहुत ही फेमस कथन है, I think so I exist. कॉगिटो अर्गो सम. मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं. कुछ दार्शनिक दर्शन की उत्पत्ति मानसिक अशांति से मानते हैं. दे बिलीव दैट ग्रीफ और मेंटल अनरेस्ट इज द ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी. गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार के असंतोष का अनुभव किया और निराशा भावना से ओतप्रोत होकर जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए महल के ऐश्वर्य को छोड़कर वो निकल पड़े और इस प्रकार उनके दर्शन का आरंभ हुआ. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल दर्शन का आरंभ किसी एक भावना से ही होता है. व्यक्ति के मन में जब आश्चर्य होता है या संदेह या जिज्ञासा की भावना होती है, तो मनुष्य के मन में एक प्रकार की बेचैनी होती है और दर्शन का आरंभ होता है. अतः ये कहना कि केवल आश्चर्य, केवल जिज्ञासा या केवल संदेह से दर्शन का आरंभ होता है, ठीक नहीं है. Now we come to the meaning of philosophy. दर्शन का अर्थ. दर्शन के अर्थ को हम तीन प्रकार से देखेंगे. जनरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, व्हाट अ लेमैन अंडरस्टैंड्स बाय फिलॉसफी. आम फहम की भाषा में दर्शन क्या है. एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, दैट इज लिटरल मीनिंग, और वी कैन से शाब्दिक अर्थ, दर्शन का शाब्दिक अर्थ. एंड स्पेसिफिक मीनिंग. स्पेसिफिक मीनिंग, फॉर स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलॉसफी we have to delve into the various definitions. बहुत सारी जो परिभाषाएं दर्शन की दी गई हैं various philosophers के जरिए से, उनको हम देखेंगे और then we will come to know what actually philosophy is, what actually philosophy means, or what actually is the nature of philosophy. Coming to the general meaning of philosophy, what a layman understands by philosophy, what a common man understands by philosophy. We can say it is an activity people undertake to understand fundamental truths about themselves, the world in which they live, the way people think about life and deal with it,
a comprehensive picture of universe, a guide to life. This is how we generally interpret philosophy. There is a popular misuse of the word philosophy. It is applied to almost anyone and anything. Very often, we find a friend giving lectures and dictates, and we just label him as a philosopher. So, we speak of philosophy of life, philosophy of business, philosophy of driving, etc. In this context, also, philosophy is used. The term philosophy is used. If this popular use of the term were to be accepted, it would imply that anyone who thinks seriously about a subject is a philosopher. To have a proper understanding of the philosophy as a discipline, we have to embark a journey into the meaning. We have to reflect on its etymological meaning and various definitions of philosophy which have been provided by great thinkers. Looking at the etymological meaning of philosophy, that is literal meaning, या फिर कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ. फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं डिस्क्राइब करूंगी. फिलॉसफी का क्या मतलब है और दर्शन शास्त्र का क्या शाब्दिक इंटरप्रिटेशन है. सो ऐसे जैसे कि हम देख सकते हैं स्लाइड में, philosophy, the term philosophy has been derived from the Greek term philos, which means to love, and Sophie, which means wisdom. So the word philosophy, the term philosophy means love for wisdom. Vidya anurag, ज्ञान के लिए प्रेम. And this love for wisdom discovers, help us to discover the truth. फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं. दर्शन शब्द अपने आप में संस्कृत के दृश्य धातु से बना है. दृश्य का अर्थ है देखना. यदि हम इस शब्द की व्याख्या करेंगे तो कहेंगे दर्शते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसे देखा जाए. तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपनिषदों में जहां पर सत्य के दर्शन की बात कही गई है वहां पर दृश्य धातु का प्रयोग किया गया है. तो अर्थात दर्शन का मतलब है सत्य को देखना. Now these are the definitions of philosophy. दर्शन की परिभाषाएं. There are numerous definitions of philosophy provided by various thinkers and philosophers, and some of them are listed here. Looking at these definitions, we can easily say that different philosophers have defined philosophy differently. It depends on the aspects which they want to highlight in defining philosophy. So one at a time we will see. Plato defines philosophy as the knowledge of eternal nature of thing. दर्शन का प्रयोजन शाश्वत तत्वों अथवा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है. Aristotle defines philosophy as the science which investigates the nature of being as it is in itself. दर्शन वो ज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है. Immanuel Kant, he defines philosophy as the science and criticism of cognition. दर्शन ज्ञान अथवा बोध प्राप्ति की क्रिया का विज्ञान एवं उसकी समीक्षा है. Fichte, he defines philosophy as the science of knowledge. ज्ञान का विज्ञान है. Paulson, sum total of all scientific knowledge. समस्त वैज्ञानिक ज्ञान के योग को दर्शन शास्त्र कहते हैं. Auguste Comte, साइंस ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का विज्ञान. Philosophy is the science of sciences. And Dr. S. Radhakrishna, his definition is quite comprehensive. He defines philosophy as a logical inquiry into the nature of reality. दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है. दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है.
डॉक्टर एस राधाकृष्णन की डेफिनेशन काफी संक्षिप्त है और अधिक व्यापक भी है और उपयुक्त भी है. Here are some more definitions which I thought my students should know. These are quite good definitions of philosophy, quite comprehensive definitions of philosophy. R. W. Sellers, he defines philosophy is persistent attempt to gain insight into the nature of world and ourself by means of systematic reflection. And Bertrand Russell, he defines philosophy is the attempt to answer ultimate questions critically after investigating all that makes such questions puzzling and after realizing the vagueness and confusion that underlie ordinary ideas. So this definition quite beautifully defines philosophy, and it also defines the process of philosophizing. Here are some more functions. Normative functions, जिनको हम कहते हैं निर्देशात्मक कार्य. फिलॉसफी हमें निर्देश देती है. कैसे देती है? सेटिंग ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स. द वर्ड नॉर्मेटिव refers to norms or standards. So the normative functions of philosophy implies setting of norms, principles, standard, etc. How things ought to be, how things are to be valued, which things are good, which things are bad, which actions are right, what are wrong. So all these functions are performed by philosophy. Next we come to speculative. Speculative means काल्पनिक. फिलॉसफी हमें कल्पनाशील बनाती है. फॉर्मिंग थ्योरीज, कॉन्टेम्पलेशन, abstract reasoning, theoretical reasoning. Speculative functions consist in pursuing an inquiry and forming theory. After surveying the entire field, we form a theory. कल्पना के द्वारा हम entire field को सर्वे करते हैं और एक थ्योरी की फाउंडेशन बनाते हैं. नेक्स्ट इज क्रिटिकल. आलोचनात्मक फंक्शन, आलोचनात्मक कार्य. क्रिटिकल फंक्शंस which involves analysis of merits and faults, analytic and evaluative thinking process, critically evaluating anything, looking at its merits and demerits, and then coming to a conclusion, a solution of a problem. So these are the functions of philosophy. Next is prescriptive function. Prescriptive function, आदेशात्मक कार्य. Establishing standards for assessing values. Prescriptive functions implies establishing standards, judging conduct and appraising. It seeks to discover and recommend principles for deciding what values, what actions or qualities are worthwhile. Inspirational functions, प्रेरणादायक कार्य. Philosophy also inspires us to do work, to go on the right path, to follow the right path. प्रेरणादायक कार्य, providing insight to work and guiding our activities. Next is coordinative functions, समन्वित, coordinating knowledge base of various disciplines. कहते हैं कि सारे disciplines अपने आप में philosophy से निकल के आए हैं, तो उन सब का नॉलेज बेस को कोऑर्डिनेट करना, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना भी एक दर्शन का कार्य है. फिलोसॉफिकल मेथड्स, दार्शनिक पद्धतियाँ. दे आर डिफरेंट मेथड्स विच अ फिलोसोफर एम्प्लॉयज in order to philosophize. These methods have been enlisted here. These are induction, inductive method, आगमन विधि, जिसका मतलब है अनुभवों द्वारा प्राप्त तत्वों का अवलोकन और उनमें व्याप्त नियमों को ढूंढना, विशेष से समान की ओर बढ़ना. मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू जनरल कंक्लूजन्स. premises supply evidences but they are not full assurances. So looking at the facts we conclude something. Looking at specific instances, specific
facts, we generalize something. This is called inductive method. For instance, leaf A is green, leaf B is green, leaf C is green. So we conclude that all leaves are green. Leaf A is green is an instance. These are instances, these are the premises, and then we theorize that, we conclude that all leaves are green. Next method is deduction, deductive method, that is निगमन विधि, समान से विशेष की ओर बढ़ना. It is opposite to inductive method. In inductive method, we move from specific instances to general conclusions, and in deductive method, we move from general statements to specific facts. It is a process of drawing conclusion based on premises that are generally assumed to be true. For instance, all men are mortal. This is a statement, this is a premise, and on the basis of this we can say Ram is a man and Ram is mortal. We conclude that Ram is mortal. So this is deductive method. Intuition, antardrishti, examining one's own conscious thought, immediate cognition or understanding of knowing something without conscious reasoning. We can say it is intuition. What is intuition? Immediate cognition, immediate understanding of knowing something without conscious reasoning. So this is another method of philosophy. Example, intuition inspires scientists to design experiment. Intuitions are sometimes unreliable and they must be tested, and then after testing they are to be brought to the public. Next is analysis. Analysis, जिसे हम विश्लेषण कहते हैं, शब्दों और अर्थों का विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकालना. Procedure by which we break down the substantial whole into the parts or components, and then we study those parts and components to reach a conclusion. Opposite of analysis is synthesis. Synthesis is combining, integrating, aggregating. Synthesis means संश्लेषण, हिंदी में हम कहते हैं संश्लेषण विधि. निष्कर्षों में समन्वय स्थापित करके सत्य को प्राप्त करना. To combine separate elements in order to form a coherent whole, that is synthesis. Next we come to speculation. Speculation is मनन करना, अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान पर मनन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना. Forming of theory without firm evidences, based on guesses, ideas about what might happen to be true rather than on facts. To think about what might happen or to be true. So contemplating, speculating, after speculating we reach a conclusion. So these are the various philosophical methods which we generally employ while thinking, while philosophizing. Branches of philosophy, दर्शन के शाखाएं या क्षेत्र. इन ब्रांचेस में जो हम पढ़ते हैं वही दर्शन का स्कोप हो जाएगा या शाखाएं हो जाएंगी. There are the three main branches of philosophy. These are metaphysics, epistemology, axiology. Metaphysics is the theory of reality. It studies the nature of existence, nature of God, our nature, our existence, reality of being, abstract ideas, self, what is self. All these things are studied under metaphysics. तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स को हम तत्व मीमांसा कहते हैं. तत्व, सत्ता,
यथार्थ क्या है, ईश्वर कौन है, प्रकृति दर्शन, आत्म दर्शन, ईश्वर दर्शन, ये सब तत्व मीमांसा के अंदर आता है। नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी, theory of knowledge. Nature, origin and scope of knowledge comes within the purview of epistemology. Epistemology को हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की सीमाओं का अध्ययन, ज्ञान का उद्गम कैसे हुआ, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, ये सब हम ज्ञान मीमांसा में पढ़ते हैं। थर्ड इज मूल मीमांसा, दैट इज एक्सियोलॉजी, थ्योरी ऑफ वैल्यूज। जीवन के बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक एवं धार्मिक मूल्यों का विवेचना का अध्ययन। मूल मीमांसा ये एक्सियोलॉजी को फर्दर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। दीज आर एथिक्स, जिसको नीति शास्त्र कहते हैं, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र, लॉजिक तर्क शास्त्र। Ethics, study of values in human behavior. Moral philosophy is ethics. Aesthetics, study of values in art. What is the beauty? What is the balance in beauty? What is harmony? Then logic, which studies correct reasoning. So these are the branches of philosophy. We don't have to delve too much in this. So this was just the foundation on the basis of which we will be studying the entire paper of philosophical foundations of education. So this was just the foundation which I wanted to lay in your minds, so that you may come to the point, you may understand how the entire paper is going to unroll. Thank you. Thank you. This was just the foundation on which the entire paper is based. This was just a brief layout of what philosophy is, what are the functions of philosophy, what are the branches of philosophy. And now in our next session, we will be discussing on the relationship between education and philosophy. दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध, दर्शन और शिक्षा का संबंध। थैंक यू।